V for videos equal to V for victory in the marketplace. Guys, I still see a lot of professionals, entrepreneurs not making videos. Post lockdown, the entrepreneurs are not having any choice, guys, and social media is not a choice but the only option left with these entrepreneurs. Last 5 years, I'm harping on this thing that entrepreneurs will have to make videos, guys, and they need to promote their products on the social media and the online platform. But still, it is very shocking to see that 90% of these professionals are still not understanding. And post lockdown, guys, it's a very different situation, and social media will play a much bigger role post lockdown in promoting your product, guys, because currently people are looking for things online. And again, as I'm repeating again and again, social media is not a choice but the only option. I've spoken to a lot of entrepreneurs, and when I talk to them as to why they are not promoting themselves via videos, they say, Rajesh, हम लोग अच्छे speakers नहीं हैं, हम कैमरा के सामने बात नहीं कर सकते हैं. Guys, I want to tell you that like driving, like cooking, these things can be learned. Public speaking and speaking in front of the camera can also easily be learned. So थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इसके लिए देना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, guys. Entrepreneurs will be in a very tough situation. They are already into a very tough situation because of this pandemic. और अगर आप प्रमोट नहीं करोगे अपने आप को via your videos on social media, guys, you are losing an opportunity to the people जो वीडियो बना रहे हैं. You are giving them the opportunity on the platter, and you yourself are losing the opportunity to reach to the people out there. Lot of people want to have your services, लेकिन वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि आप वीडियोस नहीं बना रहे, guys. And वीडियोस में मैं आपको बोलूँगा कि if you're talking about social media like Facebook, Instagram and LinkedIn, यहाँ पर आपको माइक्रो वीडियोस डालने होंगे. माइक्रो वीडियोस मीन्स वीडियोस less than a minute, because सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे लोग वीडियोस देखने नहीं आते, यहाँ पे लोग जस्ट स्क्रॉल करने आते हैं. और वहाँ पर जब आपका वीडियो उनको दिखेगा, माइक्रो वीडियो लेस देन अ मिनट, दे विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट यू, और वो रेगुलरली आपके वीडियोस देखेंगे और फिर वो यूट्यूब पे जाके आपका पूरा वीडियो देखेंगे. इस तरीके से आप एक कम्युनिटी बना सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर, जहाँ पे आपके वजह से उनके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन ऐड हो रहा है या उनको कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो फिर जाकर वो आपका प्रोडक्ट्स को रेगुलरली बाय करेंगे. गाइस, द सिचुएशन हैज चेंज्ड. पहले लोग बाय करते थे, आज वो पहले आपको एक्सपीरियंस करेंगे, पहले आपको देखेंगे कि क्या आप उनके वर्थ हो, और जब आप अच्छा लगोगे तो वो आपसे डील करेंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डील करेंगे. गाइस, दिस अपॉर्चुनिटी डोंट लूज, गाइस, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी आज है वो अपॉर्चुनिटी कल नहीं होगी. Today, if you see on the social media, the organic reach is almost dead, guys. 2013-14 से हम लोगों को बोल रहे हैं, तब ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा था, आज बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी you will be reaching decent number of people. I don't know what is going to happen after a couple of years. So guys, make hay while the sun shines. जब अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, आगे बढ़ो. एंड यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि you don't worry about the comments which you are getting. You don't worry आपको लाइक्स मिल रहा है या लाइक्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज जहाँ पे आप लाइक्स और कमेंट्स पे फोकस करेंगे, आप वीडियोस बनाना बंद कर देंगे, या फिर जहाँ पे लाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं वही टाइप का वीडियो बनाएंगे, अपना निश से बाहर चले जाओगे. नो, दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस. द राइट प्रोसेस इज यू मेक वीडियोस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव नॉलेज अबाउट, जो आप शेयर करना चाहते हो, एंड डोंट वरी अबाउट द पीपल, बिकॉज जो भी टॉपिक पे आप बात करोगे आपकी कम्युनिटी है, और जिनको आपका टॉपिक पसंद नहीं आएगा वो आपसे डिस्कनेक्ट होते जाएंगे ग्रेजुअली इन द कपल ऑफ इयर्स. जिनको आपका टॉपिक पसंद है, आपका स्पीकिंग पसंद है, वो आपसे कनेक्ट होते जाएंगे. तो किसी और के हिसाब से वीडियो मत बनाओ, किसी और का पैटर्न कॉपी मत करो. बी वेरी ओरिजिनल, बी वेरी ऑथेंटिक. V for video equal to V for victory post lockdown, guys. I would love to repeat this golden statement. I keep on saying this again and again. V for videos equal to V for victory in the marketplace. So happy making videos. I would love to see your videos, and do make videos, and do comment if you're going to really take my advice very seriously, and if you're going to make videos, do comment that yes, we will make it. See you on the highway of success. Bye.